गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी इवोल्यूशनरी रे। तो आज आम देखा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बा एफिनिटीज विथ कोडेट जोटा कि आम एकाइनोडर्माटार आम एफिनिटीज विषय पढ़ा। तो यहाँ हूँ बीएससी सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर थर्ड यूनिट 4। तो मैंने सिलेबस सहित थ्रू आउट तो हो तुम जानी यहाँ सिलेबस आसी माने बीएससी सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर थर्ड सिलेबस ठीक अच्छे। तो ये सहित आमर कोर पेपर 4 तो कंप्लीट होता आज कोर पेपर थर्ड भी आमर कंप्लीट हो गला। मु डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक देदेवी जो थी कि तुम सेकेंड सेमिस्टर सबूतक टोटाल तुम्हें सीरियल रे तुम जहाँ भी अच्छी तुम कोर्स बा सिलेबस वाइज जहाँ भी अच्छी तुम्हें डिटेल पाइजिबो। तो ता छड़ा मु टेलीग्राम रे मध्य टोटाल लिंक को मु शेयर करदेवी आज कहीं जेहेतु आम सेकेंड सेमिस्टरटा कंप्लीट हो गला। तो मु फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर दीटा कर टोटाल प्ले लिस्टर लिंक को मु टेलीग्राम रे शेयर करदेवी। ता छड़ा मु एफिनिटीज विथ कोडेट रो पीडीएफ टा को मध्य आज शेयर करदेवी टेलीग्राम लिंक रे। आउ एथि सहित आज क्लास स्टार्ट करुँची ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छ मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर करबो। तो जो मैंने सीपेट पाई प्रिपरेशन करुच कि पीजीटी पाई प्रिपरेशन करुच से वीडियो मध्य हेल्पफुल हेबो ठीक अच्छे। तो देखा आम प्रथम इंट्रोडक्शन देखा द डाइवर्सिटी ऑफ लार्वाल फॉर्म ऑफ इन मेराइन इनवर्टिब्रेट्स has provided an opportunity for discussion on evolutionary origin or of feature and processes of evolutionary changes है। evolutionary changes माने कौन तो धीरे धीरे जो विवर्तन है बा धीरे धीरे जो पूर्वर जहाँ थिला सेमानक ठारू धीरे धीरे चेंज होकिना वर्तमान बा आंसेस्टर बा वर्तमान पर्यंत स्टेज को जो प्रकार ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे चेंजेस आसला ताको आम इवोल्यूशनरी चेंज बोली कहूँ। तो यही इवोल्यूशनरी चेंजेसटा बेसिकली आम एकाइनोडर्माटा भी भास्ट आम देखा पाई था ठीक अच्छे। मोस्ट एनिमल फाइला आर मेराइन एंड मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स कौन एनिलिड मॉल्यूस्क एकाइनोडर्म्स तापर हेमिकोडाटा ब्रांचियोपोड किबा फोरोनिड सिपुनकुलान्स किबा आस्किडियन एंड अदर बेंथिक ड्यूरिंग एडल्ट है आर बेंथिक ड्यूरिंग एडल्ट बट हाव प्लांटोनिक लार्वा स्टेज विथ डिफरेंट बॉडी प्लान है। इट इज hypothesized that the ancestor of all echinoderm was simple, motile, bilaterally symmetrical animals with mouth, gut and anus। तो जेतिकी भी जदि आम ancestor मानक देखा एकाइनोडर्म सबू एंसेस्टर माने कौन था सिंपल फॉर्म रे थिले मोटाइल थिले एवं बायलैटरली सेमानको सिमेट्रिकल से माने थिले जोटा कि लार्वा स्टेज रे मध्ये हमें बायलैटरली सिमेट्रिकल देखिबा को पाई थाउ हैला। एवं आउ मध्ये सेमानकर कोन माउथ गट आउ एनस थिला जोटा कि हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक एवं प्रीवियस क्लास रे मध्ये हमें देखिजु हैला। These ancestral stock adopted an attached mode of life and suspension feeding and developed radial symmetry as this was more advantageous for such existence। The larvae of all echinoderm are even now bilaterally symmetrical and all developed radial symmetry आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो वर्तमान मध्य आम लार्वाल फॉर्म रे जोटा कि आम प्रीवियस क्लास आम लार्वाल फॉर्म ऑफ एकाइनोडर्माटा पढ़ी सेठी आम कौन देखी जे जेते लार्वाल फॉर्म अच्छे एकाइनोडर्म समस्त बायलैटरली सिमेट्रिकल अच्छी किंतु सेमाने जेतेबेले मेटामॉर्फोसिस स्टेज देखिना गति करिकिना एडल्ट हुंती सेतेबेले सेमानकर रेडियली सिमेट्रिकल आसी जाए बायलैटरली सिमेट्रिकल जगह रे ठीक अच्छी। तो एटा मध्य आम मॉडिफिकेशन देखीचु है। तापर देखो आम देखा डेवलपमेंट ऑफ एकाइनोडर्म लार्वा जोटा कि आम प्रीवियस क्लास में पढ़ी आउटे आम ये देखीदे। तो देखो एकाइनोडर्म जाइगोट अंडरगो कंप्लीट रेडियल क्लीवेज एंड अंडरगो गैस्ट्रुलेशन बाय इन्वेजिनेशन। These gastrula develop into bilaterally symmetrical larvae, the structure of which differ in each echinoderm class जोटा कि आम प्रीवियस क्लास रे जदि को मान देखापी चाहूच तो लार्वा स्टेज ऑफ echinoderm देखीदेव से मुझे कहीदी है। तो echinoderm that have small eggs develop
थ्रो फ्री स्विमिंग प्लांक्टोट्रोपिक लार्भा तापर से फ्री स्विमिंग लार्भा परिणत हेले दीज लार्भा आर ट्रांसपेरेंट एंड हैव द इंट्रिकेट एरे of ciliary band सेमान सब ciliary band अच्छी है that they use for feeding and locomotion तो आम प्रीवियस क्लास पढ़ी थे ciliary band केते प्रकार कार 5 पेयर्स अच्छी कार 4 पेयर्स अच्छी तो कार V शेप अच्छी तो आम विभिन्न प्रकार तांकर ciliary band सब पढ़ी थे है तो echinoderm that spawn large egg develop through non feeding larva that lack functional gut with simple pattern of ciliation तो जो एकाइनोडर्म मानकर कौन अच्छी एक डेभलप है नॉन फीडिंग लार्भा अर्थात जो मैंने फीडिंग करती नहीं से प्रकार लार्भा मानक ताले से कौन है गट फंक्शनलेस हो गला किंबा सिंपल पैटर्न रे तांकर सिलिएशन आसी सिलिया है किंतु जो माने फीडिंग लार्भा थिले आमे पढ़ीचु प्रीवियस क्लास रे सेमान को वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम रहिला तापर तांकर गट रहिला एनस रहिला ताकर सिलियरी बैंड सब रहिला तो एटा आमे सब प्रीवियस क्लास रे सब पढ़ीचु है एलोंग विथ कोडेट्स एंड हेमिकोडेड एकाइनोडर्म आर कौन ड्यूटेरोस्टोम एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखी दो एकाइनोडर्मा ड्यूटेरोस्टोम ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इन ड्यूटेरोस्टोम द ब्लास्टोपोर है ब्लास्टोपोर कौन द फास्ट ओपनिंग टू फॉर्म है becomes the anus तो ब्लास्टोफॉर्म रो एनस आसी आ माउथ डेवलप एट द लेटर स्टेज एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द ब्लास्टोपोर जो ब्लास्टोपोर एनसटा डेवलप है एवं तार ऑपोजिट रे कौन है माउथ डेवलप है एंड ए गट फॉर्म कनेक्ट द टू आउ गट कौन कला ए जो एनस और माउथ को कनेक्ट कला है द लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म हैव बाइलैटरल सिमेट्री बट दिस इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस when their body are reorganized and develop the characteristic radial symmetry of the echinoderm typically pentamerism है तो बेसिकली जो माने से माने जतबे लार्भा स्टेज रे तो बायलैटरल सिमेट्रिकल है किंतु मेटामॉर्फोसिस है कि जतबे से माने एडल्ट स्टेज को आसले सेतबे रेडियल सिमेट्रिकल देखेला और बेसिकली पेंटामेरिज्म माने कोन पांचटा तांकर आर्म टाइप रो स्ट्रक्चर बाहरला जोटा कि आम स्टारफिश से बहुत भल भाव में लक्ष्य करि परिबा है तापर किछि समान कॉमन एंसेस्ट्री देखिबा देखो तो देखो द फाइलम एकाइनोडर्माटा एक्जिबिट वेराइटी ऑफ फॉर्म डिस्पाइट apparent कौन डाइवर्सिटीज दे पोजेसेस स्ट्रिकिंग सिमिलरिटीज इन डेवलपमेंट एंड देयर बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो कौन देखो कॉमन फीचर कौन देखा द एग आर स्मॉल एंड यक ताने कौन अंडा जो सामान जो एग अच्छी भर यक अच्छी केसर अच्छी तापर देख क्लीवेज आर होलोब्लास्टिक माने कौन जोटा कम्प्लीटली डिविजन होता है आ क्लीवेज होता है तुम जान डाइगर जिते कम्प्लीट डिविजन हुए है ताको आम होलोब्लास्टिक बोली कहू डिविजन बोली कहू जोटा को आम मामल्स क्षेत्र बा ह्यूमन क्षेत्र में देखा पाई था है आउ रेडियल तब देखो गैस्ट्रुलेशन इनवॉल्व इनवेजिनेशन तब देखो आउ कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक देखा देखो द ब्लास्टोपोर हैज पोस्टीरियर लोकेशन जोटा कि तलपटे थी सीलोम इज डेवलप्ड एंड आउट पॉकेट फ्रॉम द आर्केंटेरन है जोटा कि हूँ एंटेरोसिलिक इन origin तब देखो लार्भा आर फ्री स्विमिंग एंड हैव बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी ऑल एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्म देयर एग्जिस्ट कैल्कारियस ऑसिकल अर्थात जो बॉडी रो जो स्केलेटन अच्छी से कैल्शियम द्वारा तैयारी कैल्कारियस ऑसिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्केलेटन ऑफ द बॉडी है तब देखो दीज कॉमन फीचर सजेस्टेड आइडिया दैट echinoderm have emerged out of the common ancestral structure with bilateral symmetry एटा आम जानलु से माने एडल्ट स्टेज जेहेतु बायलैटरल सिमेट्री आसला आम जानलु एंड दीज आर द फॉर रनर फॉर द ग्रुप है द रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट इज द सेकेंडरी एक्विजिशन है तब देखो दीज टू थियोरीज हैव बीन फॉरवर्डेड टू ट्रेस द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एकाइनोडर्म कौन कौन से देख गोटे हूँ डाइप्लूरेला लार्भा आ गोटे पेंटाक्टुला लार्भा देख ताहले प्रथम देखा आम डाइप्लूरेला लार्भा कौन तो यही जो डाइप्लूरेला लार्भा उपरे मो थ्योरी उपरे
ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ଟେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେଇଛି ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇକି ସବୁ ମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦେଖ Bathor 1900 suggested that different form of echinoderm probably involved from the common ancestor resembling the hypothetical Dipleurula larva। तो कौन देखा दिज लार्भा फॉर्म कौन अच्छी bilaterally symmetrical body with pre-oral lobe। देखो प्रीवियस क्लास में मु pre-oral lobe थाए बोली कही प्रत्येक लार्भा स्टेज pre-oral lobe अच्छी बोली कही तो एमान को मध्य pre-oral lobe अच्छी absence of कौन skeletal formation ventrally placed mouth and anus presence of 3 pair sac जोड़ा होची exocoel hydrocele somatocele with 2 water pore दुईटा water pore मध्य अच्छी है। तापर देखो तो यही जो कॉमन फीचर अच्छी एथु से कौन सजेस्ट कला देखो इट हैज बीन इमेजिन दैट दिस लार्वा होल्ड द की ऑफ echinoderm ancestry but it was not possible to explain the derivation of some vital echinoderm feature। कौन से देखो द वाटर भास्कुलर सिस्टम एंड इज डेवलप फ्रॉम द सीलम है। अकॉर्डिंग टू बेथर कौन water vascular system originated as 3 ciliated group which becomes 5 by the subsequent subdivision of the 2 lateral group। Embryological study show that the water vascular system arose from the outgrowth of the body। तो ये गोटे प्रकार स्टेटमेंट देले किंतु एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी कहला वाटर भास्कुलर सिस्टम टा कोठु आसी जो बॉडी वाल लो आउटग्रोथ हेई सेठू वाटर भास्कुलर सिस्टम डेवलप हेइची हैला। तापर देखो पेंटाक्टुला थ्योरी कोन तो द थ्योरी एडवोकेट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ echinoderm from the common ancestor are resembling pentactula larva। The pentactula concept of the echinoderm ancestry has certain advantage over the Dipleurula stage। कौन the recent explanation hold the view of that the echinoderm have descended from the free swimming common ancestor। तो जोड़ा मैं यहाँ देखो ये सब से ही रिपीट होती जो गुड़ाक तुमको ऑलरेडी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आउ तुम इवोल्यूशनरी तुम प्रीवियस क्लास जोड़ा पढ़ी आम जोटा डेवलपमेंट ऑफ लार्वा स्टेज तो से थ्रू ही गुड़ाक सब आसी पॉसिबली द पेंटाक्टुला लार्वा एंड फ्रॉम द पेंटाक्टुला स्टेज कौन ऑनवर्ड द डाइवर्जेंस दैट हैज एक्चुअली स्टार्टेड। तो फीचर देखा कौन गोटे हूँ पेंटाक्टुला लार्वा हैज 5 टेंटाकल अराउंड द माउथ व्हिच सीलोमिक ब्रांच फ्रॉम द हाइड्रोसिल। तो बेसिकली 5टा टेंटाकल अच्छी माउथ पाखे आउ हाइड्रोसिल सेपरेटेड द सीलम फ्रॉम द वाटर भास्कुलर सिस्टम। आ सीलम रू जो वाटर भास्कुलर सिस्टम बा बॉडी कैविटी रू वाटर भास्कुलर सिस्टम को किए सेपरेट कला हाइड्रोसिल सेपरेट कला। तो देखो however the opening of the system of the coelomic canal on the surface through the canal developed from another portion of the coelom that is exocoel is not explained है। तब देखो divergence in larval form follow pentactula stage कौन the reproductive organ never becomes radial है following their separation and attachment was entirely lost during the life cycle। तो यहाँ देखो बहुत इजी अच्छी मुझे तुमको बेसी किसी एक्सप्लेन यार ऊपर करूनी जो दरकार मुझे तुमको एक्सप्लेन करी है। तब देखो इन आंसेस्टर सॉरी एस्टेरॉइड देखा एंड एकाइनॉइड देखा द गोनाड कौन अच्छी सेपरेटेड आफ्टर द रेडियल अरेंजमेंट। तो गोनाड्स गुड़ाक सेपरेट हो गला। तापर देखो रिनोइड्स देखा जदि द अटैचमेंट ऑफ द गोनाड इज रिटेन्ड। तापर देखो इट मे बी प्रिज्यूम दैट echinoderm आर डिसेंडेंट of common free swimming ancestor probably pentactula है। तो तेणु आम पेंटाक्टुला कनसेप्ट को टिके अधिक ध्यान देवा कहीं मत पेंटाक्टुला रु ही तुम जो तुम कौन है echinoderm लार्वार माने तुम इवोल्यूशन होना आसला ठीक अच्छे। तो ताको आम देखा देखो आज रिगार्ड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ फाइलम Echinodermata it was suggested that
early work that the sea star, sea cucumber had many common features, especially at the larval stage. Hala. Both of them were held to be related in the rhinoid more closely, and they had possibly diverged very early from the pelmatozoa ancestor. तो एमान सब पेलमाटोजोआ ancestor आसीची बोली कहिची आ प्रीवियस क्लास रे आमे एमान को सब कोन कॉमन फीचर सब देखिबा को पाइथिले हैला. On other hand, ophiuroid and echinoid were regarded to be closely related. तो एटा ए दुईटा विषय रे मध्ये मो प्रीवियस क्लास रे जोटा तुमे बुझी पारुनो प्रीवियस क्लास को आगो देखो तापर तुमे जानिबो जे एमान को भितर कोन कोन कॉमन फीचर आमे सब देखिथिले. ठीक अछि. With each other due to presence of striking similarities हैला in between their larval form and also due to the presence of similar sterol हैला जोटा कि आम कौन बर्गमैन 1949 रे सजेस्ट करथिले आ क्रिएटिन फॉस्फेट हैला सेमान को आउ कौन अछि स्टेरल अछि जे कि बर्गमैन कहिथिले एवं क्रिएटिन फॉस्फेट अछि के कहिथिले यूडकी जे कि 1950 रे सजेस्ट करथिले हैला ता सहित आउ के कहिथिले फ्लोरकिन जे कि 1952 रे पुनी थरे सेटा को सजेस्ट करले हैला इन बोथ ऑफियोरॉइड एंड एकाइनोडर हैला. But recent worker like Fels 1965, Nichols 1969 and others have totally discarded the view of all early worker जो माने प्रीवियस आम जहाँ पढ़ले जो माने जो प्रकार सब थ्योरी देथिले ताको एई दुई जन कोन कले संपूर्ण भाव में खंडन करदेले एंड हाव रिपोर्टेड टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ समान मध्ये दुईटा कोन ला कॉन्फ्लिक्ट माने कोन माने नहेला जुक्ति से सब देइथिले कौन ऑन वन हैंड सम वर्कर क्लेम दैट ophiuroid and echinoid are closely related due to striking similarities between Ophiopleutos and Echinopleutos larva and that asteroid and the holothurians are related due to the larva resemblance are shown to be the total disagreement with the result obtained from the morphological paleontological study. The recent research shows that larval relationship between the ophiuroid and echinoid in one hand and between asteroid, holothuroid and that of hemichordates on the other are due to the convergent larval evolution. तब देखो फेल जे थिले से कौन showed that the echinoderm show convergent pattern of development among unrelated group हैला कोठू जोटा जे आस्टेरोजोआ तापर देखो एकाइनोजोआ आउ रिनोजोआ एंड डाइवर्जेंट पैटर्न डेवलप among related group जोटा जे ऑफियोरॉइडी हैला. Thus, modern research suggested that larval affinities cannot act as a guide in the establishing the phylogenetic relationship between different classes of surviving echinoderm. Moreover, the superficial biochemical similarities between ophiuroid and echinoid may also be the result of फिजियोलॉजिकल कन्वर्जेंस तांकर भीतर किछटा फिजियोलॉजिकल कन्वर्जेंस देखा जाए फॉर सिमिलर मोड ऑफ लिविंग जेहेतु से सिमिलर कौन अच्छी लिविंग मोड अच्छी से on the basis of morphology and paleontology early ophiuroid can establish the relationship between asteroid rather than the echinoid by comparing the skeletal structure. Again, early asteroid can show some striking resemblance to rhinoid rather than holothuroid on the basis of the arm structure. सेमान दुजनकर arm structure को लेकिना आमे resemblance बोली कहि परिबा हैला. So paleontological and morphological evidence
help the construct the classification based on the adult animal rather than the larval form। तेणु आम कहीपर जे यही प्रकार जो से भितर कनफ्लिक्ट है तेणु माने गोटे द्वंद्व सृष्टि है से जे एम भितर अफिनिटीज अच्छी कि नहीं तेणु आम कहबा जे लार्वाल फॉर्म अपेक्षा एडल्ट एनिमल को लेकिन अधिक तांकर सिग्निफिकेंस को देखा कथा है। तो एफिनिटीज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एकाइनोडर्म लार्वा। तो देखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एकाइनोडर्म शोज स्ट्रक्चरली डिफरेंट लार्वा स्टेज एंड देयर कंपैरिजन कौन कैन रिवील देयर इवोल्यूशनरी ancestry। द affinities among larval stages of echinoderm demonstrate evolutionary relationship among different classes। जोटा कि affinities of echinoderm कौन हम देखिबा। द echinoderm especially the larval form एठु देखो मैं तुमको बुझेबी सुनो है। तो कौन कौन है देख द echinoderm especially the larval form attract the attention of the many zoologists due to presence of many striking similarities। जेहेतु से किछटा सिमिलारिटीज अच्छे आम जाचु बिटवीन देमसेल्फ एंड बिटवीन डिफरेंट अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्पेशली कोडेट्स सहित किछटा सिमिलारिटीज अच्छी बोली जनागला है। तेणु यहाँ बेसी कौन है जो जूलॉजिस्ट मान को अट्रैक्ट कला ठीक अच्छे। द मोस्ट कन्विंसिंग अफिनिटीज आर नोटेड बिटवीन द एकाइनोडर्म एंड कोडेट। तो बर्तमान आम पाठ को आसिले है। तो बेसिकली दी जन भितर कौन अफिनिटीज अच्छी सेटा बेसी कौन है अट्रैक्ट कला समस्त को। हेन्स एकाइनोडर्म आर रिगार्डेड टू बी द नियरेस्ट ग्रुप ऑफ द कोडेट है। कहीं दी जन भितर किसी एफिनिटीज बा सिमिलारिटीज देखा मिलला है। हाउएवर मॉडर्न वर्कर डू नॉट सपोर्ट द व्यू एंड दे होल्ड दैट एकाइनोडर्म एंड कोडेट डाइवर्स सेपरेटली फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। किंतु मॉडर्न व्यू रे कौन कहुचे जे दी जन को केबे भी गोटे कॉमन एंसेस्टर रु आसी नाहंती बा दुई जनकर गोटे वंश रु केबे भी आसी नथिबे बोली समाने सजेस्ट करूछंती। तो फीचर ऑफ जो एकाइनोडर्म लार्वा में देखिबा कौन कौन फीचर सब अच्छी। तो देखो प्रथम देखिए लार्वाल फॉर्म ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ एकाइनोडर्माटा व्हिच शोज जनरल रिजेम्बलेंस द रिनोइड्स larva different form of these pattern। तो देखो in general all the larva shows that they might have common from same ancestor है। therefore common ancestor is coelomate निहाती भाव coelomate होइतबे सब तक common ancestor जेहेतु से समस्ते common ancestor रु आसी तो coelomate होइतबे अर्थात तांकर true body cavity अछि। आ देखो bilaterally symmetrical and free swimming है। These larvae also shows resemblance with the टोरोनारिया ऑफ बालानोग्लोसस। तो बालानोग्लोसस विषय आम तो पढ़ीनी जिते आम पढ़ा से जाना। तो एमान भितर भी किसी सिमिलारिटीज अच्छी। दस द स्टडी ऑफ एकाइनोडर्म लार्वा हैज द फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। तो एमान किसी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अच्छी बोली कह जाई पारे है। कौन द सिमिलारिटी ऑफ एकाइनोडर्म Deplorilla larva and the hemichordate tonaria has long been used as evidence suggested that larval type is the basal form of the कौन deuterostomia है। तो यहाँ को किए सजेस्ट कले यहाँ ना हो ऑल द कन्वर्जेंस हैज ऑल्सो बीन आर्ग्यू आ सहित कि कन्वर्जेंस आर्ग्यू कराई जोटा कि एम द्वारा कराला है। Significantly, these recent finding of rhinoid larva with a single diplorular like ciliary band आम प्रीवियस पढ़ी provide further evidence that diplorular form is the basal है। तो से किसी व्यूज पढ़ा देख व्यूज रिगार्डिंग लार्वाल फाइलोजेनी है। कौन कौन सब व्यूज अच्छी देख। तो यहाँ तो तुम पढ़ीदेव कौन कौन व्यूज अच्छी। यहाँ देख फास्ट अच्छी प्रोटोसिल इज अनपेयर इन बालानोग्लोसस बट पेयर इन कौन अच्छी एकाइनोडर्म है। तो यहाँ हूँ गोटे देख दी जन भितर डिफरेन्स आसला। देख एक्सटेंड एकाइनोडर्म लाक फायरेंजियल गिल स्लिट जोटा कि आम बालानोग्लोसस देखा पाइबा। यहाँ देखी जाऊँगी जोटा कि हूँ कौन तुम सजेस्ट कले। देख बिपिलारिया लार्वा लाक ऑफ
टेलोट्रच तापर देख टर्नारिया लार्वा हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिकल प्लेट विथ आई स्पॉट एटा हूँ टर्नारिया लार्वा रे अच्छी है तो यहाँ हूँ कौन काउंटर आर्गुमेंट करागला जे दुई जन भितर किसी रिलेशनशिप नहीं बोलिकी है तो ये जगह देखो फेल एंड मेनी अदर होल्ड दैट affinities between Tornaria and Echinoderm larvae are not based on many phylogenetic relationships but are merely due to the larval convergence for similar mode of life है in Fell's own word it therefore follows that within the phylum Echinoderm larva similarities do not indicate taxonomical affinities तो से कहले जे लार्भाल फॉर्म मान भितर सिमिलारिटीज अच्छी किंतु एडल्ट मान भितर सिमिलारिटीज नहीं तेणु लार्भाल फॉर्म को देखिकी सिमिलारिटीज को देखिकी आमे तांको टाक्सोनॉमिक एफिनिटी भितर तांको आमे नहीं पारिबा नहीं है द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस मे नॉट नेसेसरीली स्पीक of any phylogenetic relationship and may be due to the convergence of similar mode of कौन physiological activities. Moreover, creatine phosphate has been found to occur also in the other animal phylogenetically remote from the chordates such as in sponges है and many other कौन पोलिसिटे है तब देखो द स्टडी ऑफ लार्वाल फॉर्म ऑफ एडल्ट एकाइनोडर्म रिफ्लेक्ट केस ऑफ द कौन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बिकॉज द एडल्ट एकाइनोडर्म पोजेस मेनी प्रिमिटिव फीचर देन द लार्वाल फॉर्म तो तापर देखो द फीचर ऑफ द एडल्ट आर कंपेरेबल विथ लोअर इनवर्टिब्रेट तो आम ये एडल्ट फीचर को आम देखा कंपेयर करवा है सच आज रेडियल सिमेट्री लैकिंग ऑफ डिस्टिंक्ट ए हेड absence of anterior posterior side etc and advanced larva of echinoderm metamorphose into primitive adults hence it is an example of retrogressive metamorphosis है तो देखो किसी सिमिलरिटीज देखा मॉर्फोलॉजी हो बा एनाटॉमी हो द बायलैटरल सिमेट्री ऑफ auricularia of echinoderm is similar to tornaria of the balanoglossous है of बालनक सब कौन हेमिकोडाटा दुईजन भितर दुईटा लार्भा भितर कौन अच्छी बायलैटरल सिमेट्री दुईजन भितर किसी एफिनिटीज आसला इन रेस्पेक्ट टू देयर क्लीवेज पैटर्न आउ क्लीवेज पैटर्न सिमिलारिटीज अच्छी लुपिंग बैंड तापर एंटेरोसिलोमिक रीजन सिलम एंड बॉडी कैविटी तो युवा सब सिमिलारिटीज अच्छी आउ देख द जनरल सिमिलारिटीज बिटवीन ओरिकुलारिया एंड टर्नारिया is so great that it can only be accounted for the group of genetic affinities तो आम कहीपर दीजन भितर निहाती भाव में जेनेटिक affinities अच्छी कहीं एत गुड़ाक भितर सिमिलारिटीज अच्छी है तब देख HB फेल 1948 कौन कल concluded that similarities of free swimming larva of certain echinoderm and balanoglossous supplies ट्रू एविडेंस ऑफ कॉमन आंसेस्ट्री तो से सजेस्ट कले कौन जे बालानोग्लोसस आ एकाइनोडर्म भितर सिमिलारिटीज थिबारो एमाने कॉमन आंसेस्टर आसी थाई पारंती है तो एफिनिटीज विथ कोडेट तापर आम देखा तो देखो मेजोडर्माल स्केलेटल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोथ तापर देखा प्रेजेंस ऑफ इंफ्रा एपिडर्माल कौन नर्वस सिस्टम इन हेमिकोडाट तो देखो परफोरेशन ऑन द calyx in rhinoid echinoderm can be compared with the pharyngeal gill slit of the amphioxus तो amphioxus रो pharyngeal gill slit सहित rhinoids रो जोटा अछि तमरो calyx ताको हमें कंपेयर करि परिबा जे दिजन को सिमिलारिटीज अछि निदाम 1932 shows that relationship by the analyzing biochemical evidence invertebrate have the phosphogen in the form of arginine phosphate whereas chordate usually have कौन chordate रो कौन अच्छी creatine phosphate
तो से सेटा सजेस्ट कले है बट द एकाइनोइड among Echinodermata and Hemichordata among chordates have both arginine phosphate तो दी जन को किंतु arginine phosphate अछि Echinoderm एकाइनोइड रे आउ हेमिकोडाटा भितरे कोडेट्स रो एमान को भितरे arginine phosphate and creatine phosphate both अछि हैला तापर देखो क्लीवेज इन रेडियल होलोब्लास्टिक तापर ब्लास्टोपोर चेंज इनटू एनोस एंटेरोसिलोमस mode of xylem formation. The similarities between adult echinoderm and chordate are very few, but the affinities between the larval form are highly notable है अर्थात एम भितर आम जो लार्भा स्टेज जो affinities को अधिक आम देखा पाइले है तेणु ये गोटे जिन मन रख मेट्स निकअप जे 1869 रे tries to show that following affinities between the ternaria larva of Balanoglossus and bipinaria larva and auricularia larva of the echinoderm. तो से कौन सजेस्ट कले देख तो ये आम दुईटाक लार्भा को देख गोटे अच्छे बिपिनारिया लार्भा गोटे पटे अच्छी आम टर्नारिया लार्भा तो दुईटा को देख तो दुई जन भितर कौन कौन सिमिलारिटीज अच्छी देखा फ्री स्विमिंग बायलैटरली सिमेट्रिकल बोथ है तापर देखो ट्रांसपारेंट कौन ट्रांसपारेंट बॉडी आउ हूँ सिलियारी बैंड हूँ सिमिलार अच्छी दी जन आ देख एंटेरोसिलोमस सिलम विथ सिमिलार डिस्पोजिशन है सिमिलार लोकेशन ऑफ माउथ एंड एनस दी जन देख सिमिलार पोजिशन माउथ और एनस अच्छी है ये जो ये देख ये एनस अच्छी यार मध्य ये एनस अच्छी है तो ये देखा माउथ देख ये जगार अच्छी तार माउथ तो ये जगह देखो यार मध्य माउटा ये जगह अच्छी है तो ये दी जन भितर कौन सिमिलारिटीज किछटा अच्छी आउ देखो आड्रेपोरिक वेसिकल इन द बिपिनारिया आर थॉट दैट टू बी होमोलोगस विथ द हार्ट वेसिकल ऑफ द बालानोग्लोसस है तो यार हार्ट वेसिकल सहित तार मेड्रिपोरिक वेसिकल रो सिमिलारिटीज अच्छी तो देखो Echinoderm larva and origin of chordate. Echinoderms are common diplodocus larva with hemichordates. Thus, it is unestablished that the fact that Echinoderm is very near to the chordates. है Many scientists have attempted to prove that the chordates have the originated from the Echinoderm. तो chordate टा Echinoderm रो आसीची. So Echinoderm हेमिकोडेट्स एंड द हायर कोडेट आर टुगेदर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप कौन ड्यूटेरोस्टोम तो गोटे ग्रुप कौन है ड्यूटेरोस्टोम को क्या दी जन तीन जन भितर किछटा सिमिलारिटीज अच्छी ड्यू टू सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ द ओरल अपर्चर्स है तब देखो इवोल्यूशन ऑफ द कोडेट फ्रॉम एकानोडर्म कौन कौन प्रकार भितर इवोल्यूशन आसला कोडेट्र है देखो न्यूटेनस थियोरी प्रोपाउंडेड बाय गास्टन इन 1894 और 1928 hold that the chordates arose from the कौन कौट अच्छी से सज कले न्यूटेनस फॉर्म ऑफ ऑरिकुलारिया लार्भा से आसी हाँ तापर देखो द सीक्वेंस इज ऑरिकुलारिया लार्भा है सीक्वेंस ऑरिकुलारिया लार्भा आसला से टर्नारिया लार्भा आसला तापर देखो टेडपोल आसला आसिडियान तापर न्यूटेनी फ्री स्विमिंग कोडेट्रे आसला तो यहाँ हूँ तार सीक्वेंस है तो ये जगह देखो देखी द एडोरल सिलिएट बैंड ऑफ ऑरिकुलारिया प्रिज्यूम फंक्शन टू कन्वे food particle in the oral apertures and for this it has been converted to the floor of the pharyngeal cavity. Gaston suggested that endostyle was derived from the loop of the edoral band of the auricularia larva. तो से सजेस्ट कले जे जो एंडोस्टाइल अच्छी से एंडोस्टाइल एडोराल बैंड जोड़ा अच्छे ऑरिकुलर लार्भा सहित सिमिलारिटीज अच्छी है तब देखो an atrium was developed in course of time protected the gill the fish like swimming larva of tunicate is held by him
to be formed from the development of muscles among the side of the elongated body. The ciliary band were then put upward and subsequently rolled up है ऊपर को उठीगला सिलियरी बैंड और सेठी रोल होगला with the underlying nerve plexus to form the neural tube सेठी neural tube develop है तो ये यही प्रकार सब मॉडिफिकेशन को प्रकार आसी देख है मोस्ट ऑफ मॉडर्न वर्कर लाइक बेरिल 1955 have supported the many theory of gangster but deny the origin of tadpole से बहुत गैंगस्टर जो थ्योरी को से सपोर्ट तो कले किंतु जो ओरिजिन ऑफ टेडपोल आसिला ताकू से डिनाई कले बा मना कले है टर्नारिया लार्भा ऑफ हेमिकोडाट इज मच मोर सिमिलारिटीज विथ लार्भा ऑफ एकाइनोडर्म बट एटी मन रख डिफर इन द मोड ऑफ ओरिजिन एंड इट स्ट्रक्चर तो जो मोड से ओरिजिन तार जो उत्पत्ति होती से जो मोड अच्छी तार स्ट्रक्चर अच्छी से डिफरेंट है Young 1981 supported the neurotonous larval theory of gangster किंतु यंग कौन कले 1981 रे एई को सपोर्ट कले एको तो आउट के हमें देखि देला आउट के तमे क्लियर हो जिवो देखो हमें जे देखिबा बायलैटरल प्रिमिटिव आसियल फ्लैटवर्म देखिबा सेटु कोन कोन डेवलप होला देखो एपटे डेवलप होला कोन आस्किल हेलमिंथिस प्लाटिल हेलमिंथिस नेमेटिना तो एठी कोन डेवलप होला देखो एठी देखो डेवलप होला तमोर एकाइरुलोडिया तापर देखो स्काइजोसिला मोलुस्का आर्थ्रोपोडा एनिडा जदि एपट साइड देखिबा कोन कोन डेवलप होला देखो जोठी आसला एटा कोठु आसला तो आमे जानि पालु नै किंतु देखो डायप्लोडा तापर एकाइनोडर्माटा हेमिकोडाटा आ कोडाटा आ जदि ए जगह देखिबा एटा होची कोन अलगा पर आसीगला जेटा होची सिटोगांथा तो ये जगह आम ये पोर्सन को जो देखा यहाँ हूँ आम कौन ड्यूटेरोस्टोमा एपट देखा यहाँ हूँ कौन प्रोटोस्टोमा है तो यहाँ यही प्रकार तार फाइलोजेनी आसी है तो गोटे ओरिजिन रु कौ प्रकार डाइवर्स आसी सेटा देख है तो ये किसी सिग्निफिकेंस देखा देख देखिए all the larvae of echinoderm कौन have bilaterally symmetry body hence it is believed that ancestor of echinoderm has the bilaterally symmetrical animal. This ancestor was called Diplerula but according to Simon 1988 this ancestor was called Pentactula. Se called it Pentactula. The Pentactula ancestor is on यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आमे पेंटाक्टुला एंसेस्टर को बेसिकली एक्सेप्ट करूँ है हाउएवर द रेडियल सिमेट्री इन द एकाइनोडर्म इज सुपरफिशियल concealing the true bilaterally symmetry तो देखो the adult echinoderm are more primitive than the larva because they possess the feature of lower animal like porifera coelenterata. The primitive character are radial symmetry, absence in head, lack of anterior and posterior end. Hence, during metamorphosis, the advanced larval become the primitive adult. Hence, metamorphosis may be called the retrogressive type. Retrogressive माने कौन मु गोटे क्लास रे retrogressive कौन बुझेइली जोठी कि किछि ऑर्गन रिड्यूस हो गला आ सेई जगह रे नुआ ऑर्गन किछि डेवलप हैला तो एई थ्योरी एई मेटामॉर्फोसिस एको सजेस्ट करला ठीक अछि तो एटा हला हमर तो कोन किछरा में एफिनिटीज विषय रे पढिले तो एटा बहुत बहुत माने ये पाठ कोन माने जने साइंटिस्ट ताको डिनाय कले जने साइंटिस्ट ताको एक्सेप्ट कले तो एई प्रकार भितरे द्वंद्व भितरे माने थ्योरीटा हेछि हला तो आज पई कि नेक्स्ट क्लास रे हमें अधिक पढिबा थैंक यू।